Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on monthly policy review, also known as MPR. And MPR is being released by PRS Legislative Research by end of every month. So I'll be discussing MPR for the month of January 2022. This is something which is very important for your prelims and mains. You'll get some fodder point that will help you to write some key points in the mains examination. So without any further delay, let's get started. And something about PRS legislative research. This was found in 2005. It's an independent research think tank which is working towards strengthening the legislative process, and it assists the member of parliament and legislative assemblies. For more details, you can refer to their websites also. Now, if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video helpful, do not forget to press a like button. So first news, that is framework for digital transition in offline mode, right? RBI has come up with the regulations where offline payment would be possible. So the Reserve Bank of India has released a framework where it will facilitate the small value digital payment in offline mode. ये एक ऐसी मोड होगी जहां पे किसी भी इंटरनेट या टेलीकॉम कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ी, right? So what is the amount that would be applicable? So maximum जो amount की गई है इसकी limit है 2000 rupees and per transaction would be 200. So according to the framework, the offline payment may be made using a channel of instruments such as card, wallet or mobile devices. Now they can made face to face and might be offered without additional factor authentications. तो कोई OTP की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई additional factor authentications की जरूरत पड़ेगी for this transition. As I've told you, 200 rupees per transaction एक limit set की गई है and the maximum is 2000 rupees. Now, explicit consent of a customer would be required for enabling an offline transaction for his payment instrument. तो उसको enable करवानी होगी so that it can have a successful transaction whomsoever he want to. Draft Rubber Promotions and Development Bill 2022. So according to the Ministry of Commerce and Industry, they have released a draft Rubber Promotion and Development Bill 2022. And this bill seeks to replace the Rubber Act of 1947. Factually important point for prelims. Now in 1947 Act, this provided for development of rubber industries and constituted the Rubber Board. Now, according to the ministry, there have been several changes in the rubber industries जहाँ पे ये ज़रूरत देखी गई है कि जो पुरानी laws है, जो पुराने provisions हैं, उनको reorient की जाए and the functioning of the rubber board should also be come up with the new regulations. Now, the rubber board establishment under the act has been retained under the draft bill. So these are some of the key provisions that government has included. Now, क्या functions करेगी ये board? First is to develop and assess the new rubber plantations. Second, providing scientific and technical advice for improving the functioning of rubber industries, because rubber industry is something which is very important in India, right? एक बहुत ही important एक portions है जहाँ पे लोग employed. Undertaking skill development and training for the rubber industries. So whatever advanced technology innovations are coming in the rubber sector, that has to be implemented via skill upgradations. Collecting statistics from stakeholders in the rubber industries and advising the central government on the matter, including the development of rubber industries. So these are some of the core functions of the rubber board. And I just tell you, यहाँ से बहुत सारे questions आपसे prelims में पूछे जा सकते हैं. So make sure you take note of all the important functions of the rubber board. Now, draft National Air Sports Policy that has been recently released. The Ministry of Civil Aviation उन्होंने रिलीज की है ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 और ये इनकम्पास करेगी बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को एज अ मीडियम ऑफ एयर, राइट? सो दिस पॉलिसी इन्वॉल्व टू कवर एयर स्पोर्ट्स. 10 ऐसे एयर स्पोर्ट्स हैं जो इंक्लूड करेंगे एरोबैटिक्स, एरो मॉडलिंग, बैलूनिंग, ड्रोन, स्काई ड्राइविंग, पैराग्लाइडिंग एंड विंटेज क्राफ्ट. So these are some of the important air sports that has been included under this. And the draft policy envisions India as one of the top sports nation by 2030. तो air sports पे भी या फिर sports पे direct आपसे ऐसे पूछा जा सकता है. So make sure you include this point when it is asked in examination. Now, aim of the policy, what is the rationale behind this policy? First is to adopt the best practices in all aspects, enhance participations and successful of Indian sport person in the global air sports event,
और प्रमोट करना डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और एयर स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट को इंडिया पे, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द कोर एसेंस ऑफ दिस पॉलिसी। अब की फीचर्स की अगर बात करें ड्राफ्ट पॉलिसी में, तो सबसे पहले गवर्नेंस स्ट्रक्चर पे ध्यान दी गई है। सो द पॉलिसी प्रपोजेस आर 2-tier गवर्नेंस स्ट्रक्चर फॉर एयर स्पोर्ट्स इन इंडिया। एक एपेक्स बॉडी बनाई जाएगी विच वुड बी एसोसिएटेड विद द एयर स्पोर्ट्स। नाउ दिस एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया विल बी द एपेक्स गवर्निंग बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री, और ये प्रोवाइड करेगी गवर्नेंस इन ओवरऑल एस्पेक्ट्स सच एज एयर स्पोर्ट्स, regulations, certifications, and penalties. So, among all, this would be the apex body that would be regulating the entire air sports structure in our country. ना सेफ्टी पे भी ध्यान दी गई है। दो ड्राफ्ट पॉलिसी वो प्रोहिबिट करती है किसी भी इंडिविजुअल को इन्वॉल्व इन एनी स्पोर्ट्स और वॉयलेटिंग एनी राइट ऑफ वे विच इज मैंडेटेड अंडर द क्राफ्ट, राइट? फर्दर, कोई भी अगर एयर इंसिडेंट या एयर स्पोर्ट्स में किसी भी तरह की एक्सीडेंट रिपोर्ट की जाती है तो इट हैज़ टू बी रिपोर्टेड विद इन 48 आवर विद इन द कंसर्न एयर स्पोर्ट एसोसिएशन या फिर एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू, राइट? सो मैंडेटरी है कि 48 आवर के अंदर उसे रिपोर्ट करनी है। Now, some incentive is also the part of this air sports. तो currently जो GST है on the purchase of air sports is equipped between 18 to 20%. But to make air sports more affordable, government ने decide किया है that they would request GST Council to rationalize the GST जो rate है air sports equipment पे उसको 5% या फिर उससे less किया जाए. At present it is 18 to 20, but what government is looking forward to reduce down it to 5% or less than 5%. फर्दर द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो PLI स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर के आई है उसमें भी बहुत सारे इनकरेज किए जाएंगे हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को। जो आत्मनिर्भर भारत की इनिशिएटिव्स हैं दैट विल आल्सो बी द पार्ट्स ऑफ एयर स्पोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग। सो दिस इज हाउ द इंसेंटिव वुड वर्क। नाउ गाइडलाइन टू प्रमोट यूजेस ऑफ ड्रोन इन एग्रीकल्चर। सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर ने रिसेंटली अमेंडमेंट इश्यूज की है जहाँ पे सब मिशंस फॉर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशंस पे ध्यान दी जाएगी, एंड दिस वाज एक्चुअली लॉन्च्ड इन 2014-15 टू सीक इंक्रीज रीच ऑफ फार्म मैकेनिज्म, राइट? एक जो मार्जिनल फार्मर है वो अपने प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर पाए। सो दैट इज द रीजन दिस हैज बीन लॉन्च्ड, एंड द अमेंडमेंट सीक्स टू प्रोवाइड financial assistance to agriculture sector and to promote the use of drone in agriculture, right? Although गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस बताई हैं ड्रोन की, बिकॉज दीज आर द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन दैट इन लॉन्गर रन ऑल्सो विल बेनिफिट द फार्मर, बी इट इज पेस्ट कंट्रोलिंग, इट इज लोकस्ट कंट्रोलिंग, और इट इज लाइक फर्टिलाइजर्स की अगर बात करें उसकी ओवरऑल अगर रेगुलेट करनी है, these are monitoring of the agriculture crop produce. So this things is possible with the help of the drone technology. Now key features of the amendment की अगर बात करें, पहली है financial assistance for the drone demonstration. जो FPO होंगे farm produce organization that would be eligible to receive a grant up to 75% of the agriculture cost जो कि demonstrated होगी field में। उसके अलावा जो ड्रोन परचेज है उसमें गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी दैट 100% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ड्रोन और 10 लाख रुपीस जो भी कम हो वो प्रोवाइड की जाए, एंड इट प्रोवाइडेड फॉर द परचेज ऑफ ड्रोन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स, जो एग्रीकल्चर काउंसिल जो काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, रिसर्च कृषि विज्ञान केंद्र और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, ये सारी परचेज में भी इनको मदद करेंगी इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द टेक्निकल असिस्टेंस। Draft Spices Promotions and Development Bill 2022. So this bill was released by the Ministry of Commerce and Industries, और ये जो बिल है वो स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986 को रिप्लेस करेगी, राइट? सो 1986 was an act which constituted the Spice Board of India as a statutory board. बाद में इसमें मर्ज कर दी गई by the Cardamom Board and Spice Export Promotion Council. So this is how the thing has actually evolved. अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री अब क्यों ज़रूरत पड़ी है इस तरह की चीज़ों की, देयर इज अ नीड टू एक्सपैंड द मैंडेट ऑफ स्पाइस बोर्ड टू फोकस एंड अटेंशन ऑन द एंटायर सप्लाई चेन, not only in India but also abroad, because we are exporting the spice. The quality of spices that India has is among the best, right? So the spice board established under the act has been retained under the draft bill, और जो भी इंडिविजुअल इंगेज होंगे इस बिजनेसेस में ऑफ द स्पाइस शैल ऑब्टेन अ सर्टिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द बोर्ड. So this is something which is actually helping the people or the people engage in these activities so that they can double their income also and get the leverage from the government also. Now responsibility of the board बताई गई है कि क्या क्या कोर वर्क होंगे इस बोर्ड के,
overall development and marketing of small and large cardamom, and promoting the export of the species listed in the schedule of this act. So this is the core responsibility of the board. Functions क्या क्या होंगे? First is to monitor and propagate data regarding the demand and marketing of spices in India and abroad, providing scientific and technical assistance जो कि improve करेगी overall functioning इस industries के. उसके अलावा जो अपस्केलिंग है, स्किल डेवलपमेंट है, training of the spices would also be provided, and advising the central government on the matter that include development of spice industries, import and export of the spices. As I've told you, we have some of the best quality of the spices, cardamom and many other sort of spices that we India produces, right? So as such, this is very essentially important कि इसमें एक regulations हो और export को ज़्यादा से ज़्यादा promote किया जाए. Now, Tea Draft Promotions and Development Bill 2022. So the Ministry of Commerce and Industry has released the Tea Promotions Bill 2020. According to the ministry, there has been several changes in tea industry due to which there is a need to expand the mandate of tea board by introducing the new Tea Act. So this is what the government is coming up with the regulation. और ड्राफ्ट बिल की बात करें, जो नई ड्राफ्ट बिल है दैट सीक टू रिपील द टी एक्ट ऑफ 1953 और इन्हांस करेगी effectiveness of promoting and developing the tea industries, increase the function of tea board to address the several matters. And in 1953 जो एक्ट आई थी पुरानी वाली जिसको अभी रिपील की गई है, it actually regulated the tea cultivations, export of tea and establishment of tea board. Now the tea board established under the act has been retained under this draft bill. Functions क्या क्या होंगी बोर्ड की? The monitoring and export part, import part, price of the tea and tea leaf is something that would be the part of the board. आज के डिस्कशन में मैंने आपके साथ 3 बोर्ड डिस्कस किए. मेक श्योर यू टेक अ नोट ऑफ दिस. दीज ऑल बोर्ड्स फंक्शनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. जो भी 3 हमने डिस्कस किए. प्रोवाइडिंग साइंटिफिक एंड टेक्निकल advice to improve the functioning of tea industries, undertaking the skill development, that is again the same part, protecting intellectual property right, because IPR is a big concern, right? Although India की जो दार्जिलिंग टीज है या फिर अब बात करें मुन्नार की जो टीज है काफ़ी फेमस है अब्रॉड भी. Advising the central government on the matter including the development of tea industries, import and export of tea. So this was all about for the MPR that we are discussing in January. We have a lot more other initiatives for you, that is daily news and editorial analysis, IAS GAZETTE magazine that you can download from our website, Fortnight Current Affair, which is released on 2nd and 4th Sunday. PIB compilation has already been released. The gist of YOJNA and Kurukshetra for January has also been published in our YouTube channel. You can check out via the playlist section. And today we have discussed MPR. Other than that, we have mind map, daily blog and static quiz, which you can check out. These initiatives will definitely help you to sail through the journey of civil services. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.